जस्ट 1 मिनट अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सर अभी आप कंटिन्यू कीजिए। Okay, thank you. Sorry for this technical interruptions. And you can see that the temperature level of the water at the 4 stations, how it will be varied and how it will be different between that among the stations are there. Next, please. Similarly, this is the turbidity level. And one important thing I will be just draw your attention that this green line shows the optimum level. This optimum level is decided as per the requirement of the aquaculture activities. Aquaculture activities that we can say that for the fishes, what level will be required to survive them. So don't be confused that it is for the human being or for the aquaculture. So it is this limit is solved about that aquaculture limits are there. Next, please. This is the pH level of water. Next, please. Next, please. That's the electric conductivity. Next. This is the dissolved oxygen in the water. And variation is clearly show that how it will be more in the winter and how it will be less in the summer. And at the station number 4, you can see this is the close that optimum limit is there, because what is that requirement is there, and beyond that there is a polluted, that shows the pollution is there. Next, please. Next, please. BOD. That is very much fluctuation in the BOD is there, and this is at 4 stations. It means we can say the whole water body or whole river lines more BOD is there. More BOD that we can say you people are the very knowledgeable person, and you can you must know that you are maybe knowing this. That what is the BOD, and it is a very much important pollution indicator parameter is there. Similarly, next is there. Next. Next, please. COD. This is the chemical oxygen demand. This is also more than that's the optimum level. Next, please. Next, please. Yeah. Nitrate. This is also a very less nitrate is there. That we can say that nitrogenous components are very less. That will be required for that floral growth. Next, please. The similarly nitrite is there. Next, please. Ammonia. This is very toxic content in the water is there, and it is also so that is more than optimum level. Next, please. Total hardness of water is there. It is so that at the station number 4, it is beyond that limit is there, while the station 1, 2, and 3 containing very less hardness is there. Next, please. Fluoride. Thank God that this is very less, and this is analyzed for the human health is there, and this is not dangerous for the human health. It's very less fluoride in the water is there. Next, please. Chloride also. Next. Total alkalinity that will analyze in the water. That shows that how many calcium carbonates are there. Next, please. Phosphate. Yeah. Next. Sodium. Potassium. Next, please. Similarly, heavy metal also analyzed in the water is there, and we can see that heavy metals also are beyond the limit. Lead. Next. Chromium. There's a hexavalent is there. Cadmium. Next. Cobalt also. Next. Yeah. On the basis of these
all water quality parameters. We directly cannot estimate, or these water quality parameters can give the ideas about this water body may be polluted, may not be polluted. So to verify these our results, we have gone through that water pollution index as well as heavy metal index also. Next, please. Next, please. You can see this water pollution index shows this water body is heavily polluted. This orange line is heavily polluted, and red line is that's completely useless over there. So this we can say this is the heavily polluted water body, is that one. Next, please. Similarly, we can see that heavy metals pollution index is there during the 2013-14. This water body is very much dangerous than that previous year 12-13. But both the year it can be concluded that this water body is the polluted. Next, please. Next, please. On the basis of these water quality studies, we can conclude that. Next. Oh, right. In short, we can say this Tapi river is fully polluted. Next is there. If we talk about the station wise, that station 1 comparatively less polluted than the station 4. It means downstream from the after Ukai Dam, that water body was river was started. From that, pollution level was step by step was increased over there, because that complete industrial waste, complete that we can say the agriculture waste, complete domestic waste is fully flow in the water and ultimately deposited over there. And at the estuarine point of view, that water is blowing through the estuarine flush back, and this from river force will goes to the sea. That contamination will be move over there. So that why station number 4 are very heavily polluted. And if we talk about the seasonal variation in that winter season was more polluted, and the possible source of the pollution in the water body is there. We can say point source, industrial effluent, and domestic sewage. Already I have told you that on the bank of Tapi, lot of number of cities are there, number of industrial developments are there. That's why this industrial and domestic waste will be added to the river. Next is there's a non-point source. We can include as agriculture runoff in the catchment area in the Tapi River Basin. Huge agricultural fields are there. A big agriculture area is there. In that, the chemical fertilizers have been used by the farmers. Ultimately, that by the runoff, it will be added to the river. Next is there. So many activities. In this, one more thing I want to add over here, that in this river, we have studied by the festivals like the Ganesh festival. During that, we have we have worship the Ganesh idol, and ultimately that was dumped down to the river. That also a very much important source of the pollution is there. And I'm very happy to share with you that recently, yesterday, I got the paper from the Sustainable Water Resource Management. The Springer Journal is there that I published. This paper is there. Next, please. Okay. For the point of management is there. One important thing, first of all, we need public or people must be aware how they can save the river. First thing is there, how they can protect, conserve that river is there. Second thing is there as well. Government also take the very rigid step to stop or to change the inlets of the river, like industrial waste should be added to the river. That must be treated, strictly must be treated, and after that should be added in the river. Second thing is that domestic waste, like municipal corporation also add the domestic waste in the river is there, but that should be taken the step for the pre-treatment of that one, and after that should be added. And I appreciate the activity of Surat Municipal Corporation that they have take a step for the idle immersion. They have prepared an artificial pond, number of artificial pond over there, and they dump that Ganesh idol in that one, and they stop to add the idols in the river.
So such kind of steps should be taken over there. These are the research paper we have published about the TAPI. Next, please. Paper in the journals and paper in the proceedings are there. And number of abstract, number of presentation that we can say that should be added. And I have tried as my best for the TAPI conservation to add the tool to the scientific community that how they can be protected. And just we published a lot of things are there. Next, please. These are the presentations. Next. And we have published this abstract from south to north. It means from Tamil Nadu to Jammu Kashmir and from Bihar to Gujarat. Almost all states I have covered for the publish regarding such kind of contents. Next, please. Next. Thank you very much to listen me. And I have personal request to the people, please try to conserve the Tapi River because this is the lifeline. This provides a lot of things to us. And it is our priority, prime priority to the protect the rivers. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कुछ बात करूं इससे पहले हमारे साथ सीनियर मुनि जी है और सुहास ताई है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बात रखें। मुनि जी। Thank you, Professor. It was very elaborative. It's my pleasure. It's my pleasure. But I have certain concerns and deep concerns. Sure. On the biggest pollutant or polluter is the world water body. The EPA says phosphorus content should not exceed 1 to be released. Right. Now, world over, dams which are 30 years or more old, their phosphate content is more than 1. So the first violation comes from the government discharge. Okay. Now, and if the government is the biggest violator, how do we check the people down the line in the societal hierarchy? छोटे लोगों को हम कैसे कहेंगे चुप रहो? Actually, I'm very pleasure to discuss with you. You have very nice and very deep concern regarding that phosphate. An important source of the phosphate in the water body is there. That is the natural sources that we can say by the rocks, erosion that we can say. Second, with the agricultural waste, agriculture catchment areas waste is there because that fertilizer will be added over there, and ultimately they were deposited. I have world water data there. I'm agree with you. I'm agree with you. The point is, how do we mitigate? जो भी control करना है, कहाँ से शुरू करें? That is my point. I'm not saying you don't have this data because of course you are in the middle of the storm, eye of the storm, so you would know it definitely. My only point is, where do we begin? 80 to 83% of Indian water pie is dedicated to agriculture. Right. And world over, agriculture as a source of contamination is 56%. World over, water pollution by agricultural runoff is 56%. Industrial is 29.3, say 30%. And domestic is 14%. We are looking for a key under a roadside lamp post simply because light is सोचो रोड पे जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना साहब. I'm thinking their government will listen to. Right. Just simply you want to discuss about that how we can control this increasing order of this phosphate in the water body.
The dams are violators. The agriculture is violator. So dam Yes, sir. to facilitate agriculture it couples the whole. It squares Right, up right. the whole point. Actually, as per my opinion, government should be appreciate the organic farming. I think so, because this is not a single day we can control such kind of things. Organic farming may be a step for this one. Because in organic farming, I want to bring only water, not because organic will involve many other parameters. Many parameters there, but inorganic and organic farming, man culprit is there, that is the fertilizer. So where does agriculture stand? Agriculture is the biggest contributor. Right. That's why there is concerned non-point source is there. There is agriculture. Runoff is the important source for the pollution is there. So indirectly or directly, government should be appreciate the organic farming. That's why they will stop the use of the fertilizer. One more point, sir. That takes us deeper into the whole exercise. And I have no words to thank you enough. I'm really enjoying this. Thank you. If we see the world production of agriculture, yeah, the rain-fed produce is 60% and man-made irrigation fed 40%. agriculture is 40%. 40%. So what is the role of dam and our money and all that is invested by the government on a wrong path? Wrong path, right? Exactly wrong path is there. And we are just simply run off behind this one. How we can increase, And one more example I will give you here. Punjab was the biggest state to produce the wheat over there. And behind that, fertilizer was the important source only to increase the wheat production. And what is now condition is there, that soil is completely dead, or that we can say unfertilized, completely unproductive soil is there. That's why excess use of such kind of fertilizers is that cause of the lot of things of the human being as well as the water bodies. Achha, there are certain more interesting observations. Sure. Dam waters world over have pH in range of 7.8 to 8, which is highly alkaline. And that is not favoring agriculture anyway, because agriculture soil demands slightly acidic pH. Right. I was working on downside of near Katargam and Kamraj area. The pH of the soil is 9.25. Ukai has destroyed whole of South Gujarat in 50 years. The academia and the government departments do not take this. You see, Babylon and Mesopotamia left their Greece and Roman Empire because they were irrigation-based civilizations, and over-irrigation resulted into highly alkaline soil, which could not produce anything. Unless there's a scientific input from your kind of sources are highlighted to the government, I don't think we have a future on irrigation-based civilization. Irrigation-based civilization is not whatever you can say. You are exactly right. But what is the alternate for the irrigation? Whatever the production of agriculture is there, they are going to produce that one on the basis of depending on this Ukai water. Also, this report I have read already that not only Ukai dam, so many dams having the more alkaline water. pH is always 7+ is there, and the slightly acidic means 6 or 6.5. The pH is required for the agriculture, and ultimately this alkaline water does to the soil also. So farmers don't have any alternate for the irrigation sources. That's why they are bound to use of that one. Wonderful. I hear you have hit the nail. The point is, acreage means area of land, and billion liters of water volume. Right. We have not
taken agriculture beyond area and water volume. We have focused only on two parameters, which is a flawed approach. Agriculture is a lot beyond land area and volume of water. Now, the serious concern comes now. In this light of climate disturbances, either we have torrential rain or heavy drought or very cyclonic weather and all that. Suppose a university has 2,000 hectares of land as an experimental farm. How can you control such a huge land area? Because climate you cannot cover, you cannot change cover. So you will have to minimize and bring agriculture to a very scientific level, and our farmers, there is no investment on training of the farmers. They are doing from generations of training in legacy of family. Right. And if I'm not wrong, that nowadays that agriculture universities are doing work on that. What is the changes in climate and how they can use the change-based farming, or the change in farming according to climate is that the system is going on right now. They are talking about dry farming and all that, but this is very old. This is very old. Dry farming is very old. Old concept. Exactly. Old concept. Yes. This is very old concept. Rain-based farming, this is also very old concept. Any input on in-house farming? Because the only way to protect the crop from weather changes is only under controlled environment. In-house farming may be the alternate, but again, just the important problem is that there's water. No, agriculture does not need 80% of water pie of the country. That is hugely abundance and affluence of water system. Because our country is heavily irrigated, I mean rain fed, we are wasting water. We are wasting water. So first of all, we need to harvest that rain-based water, or rain harvesting should be there, and that water can be used for the agriculture. Because that rain harvested water, not acidic, not alkaline, that is almost neutral, that can be best used for the agriculture. So we can increase the water resources and we can use for agriculture, as well as we can protect our land resources also. Thank you. बिला पाटिल सर, आपको कुछ बात करना है? प्लीज अनम्यूट. मुझे बात कर जस्ट विशाल. हाँ, जस्ट आप कंपनी में हो? Because I am in Shanghai, China now, but I want to just talk 2-3. Just I just come out from factory area. Oh yes. Actually, sir, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया विशाल. हाँ. But now I am in actually China, nearby Shanghai, and from there 240 kilometers away from Shanghai. And I am on the bank of Vantage River, which the length is about 6,300 kilometers. Oh. And today's subject is pollution. But last Sunday I was gone through this river, and the city is almost means the last stage of the river. The length of the river is 6,300 kilometers. This is the third longest river in the world. Because I am working for the water. Actually, I am for some automobile new generation technology development. But I am so much interested for river, and I am working for the river pollution and other activities. When I gone through the river, across the river, and I see last stage bank of river, nothing, even single bottle also not there. Even I take the water in my hand, very good water means. And also I gone through a lot of farmers there. They say no pollution. Yes, some year before there was a big issue on the same river. But these
this river is a mother of the China, and they China did, but yeah, now we say there is a lot of farming, India, and then pollution, this, that. But people, Chinese people, okay, other way they are not good for us. But as they develop a lot of things in agriculture, equally they develop the industrial development, also the social developments, responsible peoples. So can't control, but I know Indian rivers, very difficult to us to control still. Everybody talking pollution, but there is no any guideline through government, set up guidelines as the government or not the state government. Tapi is an important river for the Maharashtra, Gujarat, and the Madhya Pradesh. But I am from Maharashtra. I also gone through many times the Tapi River. Direct water goes to Tapi River, polluted water from Jalgaon district, Jalgaon city. If see the big city. Also other many small villages, direct water goes to river. And the second is fertilizers is a big issue. Why? Because we're not done anything on the water side. Only some guidelines are there. बचाओ नदी के अपनी तरफ से मैं इतना इसीलिए बोलना चाहता कि मैं खुद अभी नदी के किनारे आया हुआ और मेरा जस्ट फीडबैक देना चाहता हूं थोड़ा ओके सर उजनिया सर आपने जो प्रेजेंटेशन मैंने देखा यू आर गॉन थ्रू वेरी गुड प्रेजेंटेशन थैंक यू और मुनि सर तो तापी के किनारे रहते हैं लेकिन मैंने मकान देखा था तो सूरत इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब सिटी है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अगर चाइना कर सकता है व्हाई नॉट इंडिया दैट इज और अनफॉर्चुनेट हाँ हम लोग बोलते हैं चाइना ऐसा है वैसा है ये थियोरेटिकल इश्यू चलते रहते हैं अभी नाउ आई एम इन चाइना फ्रॉम लास्ट 1 वीक and again I am maybe now 1 month more here because of some a new generation of auto car lamp development. I am here for study purpose, but meanwhile I am doing the other things also. If you see I am this factory area, there is just wastewater nala और मैं ये लोगों को पूछा कि इतने lot of trees are there across the road everywhere. मैं बोला कि किसने लगाया ट्री मज ये बोलता है दिस इज ऑल प्लांटेड बाय गवर्नमेंट सभी ट्री गवर्नमेंट ने लगाया है और हम लोग लगते हैं झाड़ लगाओ जब पानी डालो ये करो वो करो इतने सोशल एक्टिविटीज काम कर रहे हैं हम रास्ते पर जाएंगे ना हाईवे के ऊपर तो हमें खुद के शर्म आती है लेकिन इधर ये इन जगह भी छोड़ा नहीं लोगों ने क्योंकि मैं अभी शंघाई से 240 किलोमीटर बाहर रोड आया था इधर वाओ अगर 2 मिनट रखते तो मैं जस्ट रोड पे भी जाता मतलब इतना ब्यूटीफुल और वो लोगों ने सेट हो गया उनका माइंड कि भाई अभी नेचर के साथ आप कोई दंगा नहीं कर सकते कोई मस्ती नहीं कर सकते नहीं नेचर आपको खा जाएगा तो लाइक दिस माय फीडबैक बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा डंडा चाहिए साहब डंडा नेचर के साथ जो दंगा करेगा उसको डंडा जस्ट 2 मिनट I want to show you the नाला बोलते हैं ना हम लोग हमारा नाला किधर इसका नाला कैसा है I am coming here for the other purpose but I am more interested versus and why not benchmarking India versus China we all good bad oh that is true we're not bother but we should learn something from China also they did very good job in agriculture sector they did very good job in the industrial sector they did very good job in the social because the people are very humble they respect see just I am the roads ये कंपनी के बाहर आ गया मैं अभी सपोज हमारा प्रैक्टिकल लाइव देख लेंगे अभी देखो ये सब नाला है वेस्ट वाटर नाला है देखो एक बॉटल भी नहीं इसके अंदर एक बॉटल एक कचरा एक प्लास्टिक का बैग नहीं है सी एक कम से किलोमीटर टू किलोमीटर इधर है किलोमीटर इधर है एक लाइव एग्जांपल में मतलब इंडिया में होता तो लोग पूजा की सामग्री फेंकते इसमें हाँ इंडिया में होता है नाला तो लोग पूजा करके वेस्ट फेंकते इसमें नहीं मैंने आगे मैं अभी रोड साइड देखा दिस इज इंडस्ट्री एंड सी रोड ऑल ट्रीज एवरीवेयर ट्रीज यू कैन सी एवरीवेयर ट्रीज मैं बोला ये कौन लगाता बोला गवर्नमेंट लगाता है
Anyway, थैंक यू। thank you. बहुत बढ़िया भीला पाटिल सर, आप वहां रहकर भी ज्वाइन किया। हमें No, खुशी no, because हुई। I am more interested for India rivers, because I also frustration on our mind, but to whom I should tell, who is responsible? Lot of things are. I am till 20th June here, and once I come back again India, then I have to benchmark lot of, maybe even last month I went to Maharashtra government environmental secretary also, but people are say was they only listening but no any action. When I given the lot of big report of 50 pages of Khandesh rivers like Tapi, Girna, Bori, Panjara. Actually, I'm working in the automobile sector. Why I'm here? For new generation car, we are only importing all part from China only. Why not India? So I'm here for 1 month for study purpose. Same we can do in India. Okay, sir. Sorry. बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया पाटिल साहब। भीला पाटिल सर। Thank you, Patil साहब, wonderful. उज्जैनिया सर, मेरे 2-3 सवाल थे। आपने जो दिखाया डीजल ऑक्सीजन का, वो लेस देन 8 है 2-3 जगह। तो मैंने जो पढ़ा है रिपोर्ट, व्हेन द डीजल ऑक्सीजन 8 से कम हो जाता है, तो वहां पर जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो जो भी ना मरने लगती है, इवन फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। सो उसके बारे में आपने क्या स्टडी किया है, और ये रिपोर्ट कब के आपने की है इसे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आई आपको? हाँ आई, आपने कुछ पूछा? हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो रिपोर्ट दिखाया डीजल ऑक्सीजन के बारे में, तो मैंने जी एक जी जी। रिपोर्ट में पढ़ा है कि इफ इट गोज बिलो 8, तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ जो है वो खराब होने लगती है, इवन फिशेस एंड अदर हम्म एक्वेटिक लाइफ, इवन हम्म, प्लांट्स आल्सो, दे आर डाइड। सो इसके हम्म। बारे में आपने क्या स्टडी किया? हाँ, एक्चुअली स्टडी इसके बारे में कोई पर्टिकुलर स्टडी नहीं की है, लेकिन ये मेरा फील्ड है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूंगा कि हम्म। एक्वाटिक लाइफ आइदर फिशेज हो या प्लांट्स हो, जिसे हम हमारी भाषा में फौना और फ्लोरा कहते हैं, राइट। तो इसको सरवाइव करने के लिए पहली बात तो क्या है कि ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ये प्लांट की कौन सी स्पीसीज है, वो कितने तक जिंदा रह सकती है, कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है। ऐसे ही एक्वाटिक एनिमल्स फिशेज में भी होती है, कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, तो वो लेवल अलग अलग होता है। लेकिन ओवरऑल फिशेज के लिए 5 mg/L टू 8.5 mg/L एक ऑप्टिमम लेवल डिसाइड किया गया है कि 5 से लेकर के 8.5 mg/L ऑक्सीजन होगा ना, तो मछलियां आराम से सर्वाइव करेगी। इसमें बिलो 5 जाते ही थोड़ा सफोकेशन होगा, और बिलो 8.5 अबो 8.5 जाते ही सफोकेशन होगा। सो दिस इज द ऑप्टिमम लेवल फॉर द फिशेज एंड एक्वाटिक एनिमल्स, इवन देन प्लांट्स आल्सो। सो if the level change below 5 and above 8.5, in that there will be field suffocation and start to die. इसमें और एक बात मैंने पढ़ी है, उजनी डैम जो है, जो पूना डिस्ट्रिक्ट और सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके Okay. बारे में पढ़ा है। तो वहां पर ना 2 टाइप की इम्पोर्टेड फिशेस है। तो वो क्या करती है, इवन उनका नाम चिलापी है लोकल लैंग्वेज में, और एक तिलापिया चिलापिया। हाँ, तो तिलापिया वो, तिलापिया हाँ, वो क्या करती है कि जो भी है सारा पोल्यूशन निगल लेती है, और उसके साथ साथ जो नेटिव फिशेस है वो भी खा जाती है। तो नहीं ऐसे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वहाँ के जो फिशरमैन है उन्होंने ये बताया, जिनने स्टडी किया है,
और ये रिपोर्ट भी है कि वो 2 टाइप्स ऑफ स्पेसीज ऐसे था कि पहले वहां पर मोर देन 70 टाइप्स ऑफ स्पेसीज थी नेटिव, तो अभी सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ स्पेसीज है जो भी नेटिव नहीं है, इम्पोर्टेड है। और वो क्या करती है कि सारा पोल्यूशन भी ले लेती है, मतलब कुछ भी आए, और इसके अलावा वो नेटिव फिशेस को भी खा जाती है। और नहीं, वो नेटिव फिश फिशेज को खाती नहीं है वो। एक्चुअली वो फार्मर्स का थोड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हालांकि वो नेटिव फिशेज को डैमेज करती है, लेकिन उस डैमेज करने का तरीका अलग है। एक्चुअली तिलापिया जो मछली है ना, ये अफ्रीकन मछली है, और 1952 में इंडिया में आई थी, एक्वाकल्चर लेके आए थे। लेकिन ये अब ऑल ओवर इंडिया की वाटर बॉडी मिल जाएगी आपको, हर कहीं मिल जाएगी। ये मछली क्या होती है कि 3 महीने की जब होती है ना बच्चा, 3 महीने की उम्र होती है इसकी, तब से ब्रीडिंग स्टार्ट करती है, और ये साल में 3-4 बार ब्रीड करती है। इट मीन्स इसकी जो पॉपुलेशन है ना, वो 1-2 साल में ही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो नेटिव स्पीसीज इंडिजिनस होना है वो सप्रेस कर जाती है। उसका खाना, उसका रहने की जगह, उसका जो भी उसके हिस्से का जो है, ये खाना स्टार्ट, ये कभी भी डायरेक्ट मछली को नहीं खाती है। और इसकी जो फीडिंग हैबिट है ओमनिवोरस, ये जो मिलता है प्लांट वेस्ट, जो भी सड़ा गला सब कुछ खा जाती है, यानी कि उसका जो फीड कंटेंट है वो भी खा जाती है। तो वो मछली इनडायरेक्टली इसके ओवर पॉपुलेशन से मर जाती है। मेरे 2-3 पेपर इसमें भी। तो इनका विशाल, ज्यादा ब्रीडिंग होने से और ओवर पॉपुलेशन होने से नेटिव राइट फिश राइट राइट। मर जाते हैं, ऐसे आपका कहना है? हाँ जी, ओके। वो धीरे धीरे उनको खाना नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। आपने यदि नाम सुना हो जयसमंद लेक, राजस्थान का, उदयपुर में है जयसमंद लेक। हाँ हाँ हाँ। उसमें कभी 16 किलो 15 किलो का कटला फिश मिलती थी। कटला, अच्छा। रोहू, मृगल, काफी बड़ी बड़ी। हाँ हाँ। लेकिन 90s के बाद जैसे ही तिलापिया एंटर हुई है, 2000 आते आते तो ये कंडीशन हो गई थी, उसमें 90% तिलापिया थी, 10% इंडिजिनस फोनो था। ओके। बड़ी बिग वाटर बॉडी है, 7000 हेक्टेयर एरिया उसका है। लेकिन फिर धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोल होती नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। अच्छा जी। अच्छा। यही मेरा सवाल था, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़े तो हम्म। वो वहाँ के फिशरमैन ऐसे कह रहे थे, तो मेरा मन हाँ, में उसके बारे फिशरमैन में को क्लियर। जानकारी, फिशरमैन को जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। अदरवाइज मेरे 2-3 पेपर पढ़ना मिलेंगे, आप गूगल करके देखना। अच्छा, क्योंकि उनका तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, मतलब हाँ हाँ, मेनी जनरेशन दे आर डूइंग दिस राइट बिजनेस। राइट सो राइट राइट राइट। उनके ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे ऐसे वो मछली करती है, और यस उनके यस तो यस। कुछ रूल्स भी है फिशरमैन के। इन फ्रॉम जून टू अगस्त दे आर नॉट फिशिंग, बिकॉज इट्स अ ब्रीडिंग पीरियड फॉर नेटिव फिशेस ऑल्सो, दे टेल इसको दिस। हाँ इसको क्लोजिंग सीजन कहते हैं। हाँ हाँ जून टू अगस्त ये इसका ब्रीडिंग, मानसून जैसे ऑनसेट होता है ना, मानसून स्टार्ट होता है, हाँ। मछलियों का ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। यस तो यस। ये 3 महीने के लिए मछली पकड़ना रोक देते हैं, ताकि मछली आराम से ब्रीड कर सके और नेचुरल वाटर बॉडी में ऑटो स्टॉकिंग हो सके। लेकिन अभी इसमें भी पोल्यूशन हो गया है, जो अभी बिजनेसमैन है, मतलब जैसे हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट हर जगह है, वैसे अभी हम्म पानी में भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। तो वो लोग कह रहे हम्म। थे कि दे आर डूइंग 12 months जो फिशिंग फिशिंग करते हैं। हाँ, वो ये एज पर रूल्स गवर्नमेंट, ये रूल्स नहीं संभालते, जो नेचर का रूल है फॉर 3 months ब्रीडिंग। नेचर नेचर का रूल तो है ही है, साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल भी है कि आपको क्लोजिंग सीजन का फॉलो करना पड़ेगा। इवन देन समंदर में भी, आप लोग तो महाराष्ट्र से अच्छे जानते होंगे, अगस्त में जब पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन जो आता है, उसमें लोग समुद्र की पूजा करके फिर फिशिंग स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स जून को रुकी हुई फिशिंग 3 महीने बाद अगस्त के एंड में जाकर स्टार्ट होती है। यस सर, उसका यस सर। हाँ। लॉजिक उसका यही है कि 3 महीने जो ब्रीडिंग सीजन होता है मछलियों का, ताकि मछलियां फ्रीली ब्रीड करके बच्चे दे सके, ये कारण होता है। But the industrial is not following this rule now. They are दैट इज वेरी polluting. अनफॉर्चुनेट। Yes, yes, दैट yes. वेरी And अनफॉर्चुनेट। everywhere they are doing this type of work all over India. या दैट अनफॉर्चुनेट। Yes, yes. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, और नो नो, इट्स ये ओके।
तापी रिवर के बारे में पोल्यूशन जो है इसके बारे में भी पता चली। और जैसे जी कि जी हम हर बार कहते हैं कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि जी 3 चीजें अगर नदी के ऊपर रोकने की कोशिश की जाए, जैसे शोषण है, प्रदूषण है और अतिक्रमण है, तो जी जी नदी फिर से एक बार अविरल, निर्मल और स्वतंत्र हो हो सकती है। सकती है, तो हम बिल्कुल हो सकती सभी है। मिलकर हमारे तापी माँ के लिए कोशिश जरूर करेंगे, ऐसे जी जी लगता है। जी हाँ बोलिए जी मुनि जी। विशाल भाई, हम्म। ये सजेशंस तो आसान है, मगर हमारे स्मशान ग्रुप की भस्म नदी में नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा कोई सर्कुलर आएगा तो हम हमें मंजूर है क्या? और हमारे सब स्मशान गृह नदी किनारे पे। देखिए, यस विज्ञान की सर। बात करनी है हाँ। तो पहले गवर्नमेंट भूल जाइए, सूचना भूल जाइए, बी फेथफुल टू द साइंस। यस सर। policies should follow science, not the other way. हमारे स्मशान घर की बात आती है तो स्मशान गृह की भस्म हम छोड़ने के लिए कोई भी हमारा प्रतिबंध है वो हम मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा की सदगति जब ही होती है कि हमारी भस्म नदी में जाए। मुनि मुनिदा, वन मोर क्वेश्चन। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है। जहाँ ये सेंटिमेंट की बात आती है ना, वहाँ लोग साइंस को भूल जाते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी स्टडी भोपाल में भी हुई है, अपने महाराष्ट्र में भी हुई है, मैंने यहाँ भी की है। अपने फेस्टिवल्स आते हैं, दुर्गा पूजा, गणपति है, ये है, वो है, और ये अल्टीमेट वाटर सोर्स में जाते हैं। हमने कहा, क्लियर कहा, हम इसको रोक नहीं सकते। मुनीदा उठ के चले गए, मुनीदा। वो कुछ लाने गए होंगे, आएंगे 1 मिनट। आ गए आ गए। देखो, हाँ सॉरी, कहिए, आई मिस्ड लास्ट सेंटेंस। नहीं नहीं, मैं वापस रिपीट करूंगा, इसमें रोक दिया था आपसे, प्रोफेसर उठ गया। प्लीज प्लीज। हाँ, सेंटिमेंट जहाँ स्टार्ट होते हैं वहाँ लोग साइंस को भूल जाते हैं, राइट। अपने जो फेस्टिवल अपन मनाते हैं ना, और अल्टीमेट वो डंप डाउन होते हैं रिवर सोर्स में या वाटर सोर्स, वट एवर इज देयर। रिलीजियस मैटर, हमने पेपर में साफ साफ लिखा है, रिलीजियस मैटर वी कैन नॉट स्टॉप, बट वी कैन चेंज इट। एक छोटा सा गणपति बना करके आप घर के चौराहे पे, घर के में ड्रम में डुबो कर निकाल लीजिए, आपका विसर्जन हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो बड़ा गणपति चाहिए, बड़ा बड़ा गणपति चाहिए, गणपति 20-15 फुट का चाहिए, और वो वो भी डुमस के समंदर में लोग छोड़ते हैं, जैसे जो समंदर है वो प्लेनेट के बाहर का कोई हिस्सा है। नहीं तो तो एजुकेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। साइंस तो कोई बादल में से बरसने की तो बात नहीं है। मैं आपको एक पेपर भेजता हूँ, अभी मेरा कल ही आया है, आपको पढ़कर बड़ा अच्छा लगेगा कि जो म्युनिसिपैलिटी ने ट्राई की, ऑफ एफर्ट किया, दैट्स रियली नाइस एंड वेरी फ्रूटफुल इज देयर, वेरी चेंजेस आर देयर। सूरत में तो आई एम फ्रॉम सूरत एंड 40-50 साल का मेरा ये यहाँ संपर्क है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, जुलूस भी अच्छे निकलते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में कोई फर्क नजर नहीं आता। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। Then that is where we have a bigger challenge and bigger responsibility. Sure. That's required. That required. देखिए, आज Not की we आपकी think. टाइटल, आपकी टॉक की टाइटल ऐसी है कि आई एक्सपेक्टेड मोर देन 50 अटेंडीज। हम 3 हैं, विशाल भाई तो मजबूरन है, आप इनवाइटेड है, तो ऑडियंस में तो मैं ही रहा। फिर अभी आप जागृति कहाँ से लाए? एटलीस्ट अपन 3 भी जाग के चले ना, तो नहीं, दैट्स मोर बेटर। I am not disappointed. I'm very optimistic. The point is that even with biosciences, and I mean, I'm very glad that aquatic biology has also been added to this university. But I don't know how we can awaken people. That's But important and that's required also, because people awareness is an important step to do these all things. जब तक लोग जागेंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं होगा सब। तो कीप टॉकिंग, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन तो ये नहीं है।
देयर इज नो और लोगों- प्रिस्क्रिप्शन, देयर इज नो डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शन के एक दो गोली खाओगे तो बुखार उतर जाएगा 4 घंटे के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन। आई हैव टेकन Thank- डाउन योर मेल, I'll Sure, I'll sure. send you a mail and it will have my details. Thank you, sir. Same here. I will try to contact you in future also. Thank you. Thank you. Thank you, बहुत विशाल जी। शुक्रिया सर। और Thank you. ये Thank you, sir. कैसे ना कि कितना नंबर से ये मैटर नहीं करता है। जैसे भगवान से साथ संवाद करना है तो भगवान और अपने बीच कोई नहीं रहता है, तो वैसे सत्संग ऐसे समझ के कितने मैटर भगवान के साथ नंबर्स पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। अगर पोल्यूशन की बात करनी है विशाल भाई, इंसान इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। ठीक है, हम एक प्रार्थना से एंड करते हैं। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। राइट सर, ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।